हाय गाइस, दिस इज दिविश अग्रवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल. जैसा कि आपने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा दैट इट्स अ ईयर एंड वीडियो. एंड मुझे ऐसा वीडियो एवरी ईयर करना पसंद है बिकॉज इट्स अ गुड टाइम टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट बैक एंड look forward to the next year. So yeah, this is basically a conversation more than a video between two friends, which is you and me. I don't have a script or anything for this particular video, so let's just start. Firstly, I want to talk about things that I'm grateful for this particular year because it's been a great year work wise and personally as well. ऐसा नहीं है कि setbacks नहीं थे, failures नहीं थे, लेकिन overall it was a good year because I want to look on the brighter side. So first things first, I am grateful कि मुझे ये साल में कुछ 8-9 छोटे छोटे ट्रिप्स प्लान करने का मौका मिला एंड आई गॉट टू गो ऑन दीज ट्रिप्स विथ माई लव्ड वंस, पीपल हु आर रियली क्लोज टू मी. एंड वो क्वालिटी टाइम को किसी और चीज़ के साथ ट्रेड ऑफ कर ही नहीं सकते. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. आई मेड न्यू फ्रेंड्स स्पेशली इन द क्रिएटर इंडस्ट्री बिकॉज मैं यूजुअली ऐसे इवेंट्स पार्टीज़ को अवॉइड करती थी सिंस आई एम काइंड ऑफ एन एम्बीवर्ट. मुझे ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है. बट this year I finally pushed myself to get out of my shell and just go at parties, events and socialize, talk to people, and I actually found some great people who are my friends now and I'm really grateful for that. अच्छा, I think ये वीडियो थोड़ी सी रैंडम हो रही है बिकॉज मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं. सो लेट्स गो मंथ बाय मंथ एंड विल सी what all things happened. Okay, so first up, January में 3 major चीज़ें हुई. One was I attended one of my first few events which really helped me meet a lot of new creators and a lot of new people in general, and I found some great friends over there, and it really gave me that confidence to be in the public space and just be myself. So that was really important. Secondly, I went to Hyderabad for the first time to meet my best friend who lives there, by the way, and हम लोग को बहुत सारा quality time मिला वहाँ पे spend करने के लिए. We roamed around, explored cafes and just spend some good time over there. And lastly, we reached 20,000 followers on Instagram this January, which was just nice. Feb में क्या हुआ था? Yes, मैं इवेंट्स में गई थी. आई गॉट टू मेजर इवेंट्स विच वर हैपनिंग इन मुंबई. सो मुंबई आने के बाद में वो मेरा पहला इवेंट था एज सच, एंड आई जस्ट हैड so much fun because I met all my favorite creators over there that I've been following for many years. And second event में भी मैं बहुत सारे creators से मिली. I met विराज खिलानी, I met मासूम मीनावाला, वीरदास, all of these people. वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था दोनों ही events. I just socialized and it just after that, March में of course मेरा birthday was the highlight. Yeah, I'm obsessed with my birthday somehow. मुझे नहीं पता क्यों, but ऐसा है. So yes, मेरा birthday था 1st March को, and मेरे कुछ close friends जो पुणे में रहते हैं, we all planned a short getaway to Kolad. Kolad is a place in Maharashtra, so that was kind of a second trip that I took, and we did river rafting there, which was a big milestone for me because I am aquaphobic. So I jumped in the river just like that, and it was a big thing for me. And even that entire trip, that was really wholesome. हम लोग सिर्फ मज़े कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गाने सुन रहे थे, just having fun. Really grateful for that. हम लोग मार्च में गए थे घर पे, मतलब मेरे होम टाउन विच इज़ इन राजस्थान, टू सेलिब्रेट होली विथ माई जीजू एंड दीदी. सो हम लोग ने होली पे बहुत मज़े किए. वी एट अ लॉट ऑफ फूड, वी प्लेड, एंड फिर मेरी दी का बर्थडे था, सो वी ऑल वेंट आउट एंड जस्ट सेलिब्रेटेड टुगेदर एज अ फैमिली, विच वॉज अगेन वेरी स्वीट. फेब में एक्चुअली एक इवेंट मिस हो गया विच वॉज व्हेन माई कॉलेज फ्रेंड्स विजिटेड माई प्लेस एंड दे स्टेड हियर फॉर अ कपल ऑफ डेज, एंड आई just took them around Mumbai and showed them everything. I took them to Versova beach, then we ate at Bhagat Arachan and sat at Marine Drive, all of those Mumbai touristy things, and they all had so much fun and I had such a great time hosting all of them. So that was April में. ऐसा कुछ major नहीं हुआ, but my parents visited Mumbai and I took them around for some touristy things like Versova beach लेके गए, then ISKCON temple गए, and we had some food outside, and it was just a nice outing overall. So that is one thing that I'm grateful for because you don't really get a lot of quality time with your parents when you stay at home. So this was a nice chance, I think, because they love the beach, they love the sunset, and it just made me smile
like this. After that, May में मेरी best friend का birthday था, so we all planned a small little getaway to Lonavala, and we stayed at Zostel, which was my first time in Zostel Lonavala, and I really loved the property, loved the vibe, and the company was really nice, so I had fun and sunsets to die for. फिर हम लोग पावना लेक के पास में बैठे, we chatted, we clicked some photos, and just like that we spent the entire weekend, which was very wholesome and nice. Then moving forward, June was the highlight actually, because of one major reason. I went to Goa with all of my college friends, and it was an amazing trip. It was memory for lifetime because we had so much fun. We spent like 7-8 days in Goa, and we rode the scooty, we partied, we went to South Goa, we saw some of the best beaches, we did kayaking and sunsets, just everything was so serene and nice, just the way I like it. So Goa trip was the highlight of this year for sure. And since we are talking about Goa, my content from Goa just went viral over Instagram and YouTube. People loved the videos from there so much, and it just made my heart so happy कि लोगों को पसंद आ रहा है what we have created. And all my friends actually helped me a lot to film every single video that I have uploaded, so I'm really thankful for them that they understand what I do, and they really always support and appreciate and just help me out. Then July में we planned out a day out with my Didi and Jiju, because यहाँ पे monsoons थे मुंबई महाराष्ट्र overall, and everything around was so beautiful. So हम लोग ने गाड़ी हायर किया, we just dumped some stuff in and went randomly. हम लोग करजत पहुँचे. Then we went to Kondana Caves. It was a small little trek. फिर हम लोग waterfalls में भीगे, बारिश में भीगे, and we were just doing random stuff, dancing on the top of a hill, and पता नहीं क्या क्या कर रहे थे. So it's a very nice and fun memory. फिर अगस्त में हम लोग एक छोटे से ट्रिप पे चले गए. इंडिपेंडेंस डे वाला लॉन्ग वीकेंड था. सो मी, माई सिस्टर एंड माई सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, वी ऑल वेंट देयर टुगेदर. नासिक, इगतपुरी, हमने ये दोनों प्लेसेस कवर की. वी वेंट टू सुला वाइनयार्ड्स, वी वेंट टू इगतपुरी में कुछ जगह हमने देखी. देन नासिक में वी स्टेड एट दिस वेरी ब्यूटिफुल विला एंड हैड द महाराष्ट्रियन फूड ओवर देयर. इट वॉज जस्ट very relaxing vacation I feel like, because हमने बहुत ज़्यादा activities plan नहीं किए थे. बहुत मज़ा आया था उस ट्रिप पे, एंड एवरीथिंग अराउंड वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज बारिश की जस्ट बाद की बात है. सो सब कुछ इतना ग्रीन था, एंड इगतपुरी वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल. इतने सुंदर पहाड़, इतने छोटे छोटे गाँव, एंड एवरीथिंग वाज जस्ट ग्रीन. मूविंग ऑन, अगस्त को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक और ट्रैक प्लान कर लिया, और 19th of August, एंड मी एंड माई फ्रेंड्स इन फ्रॉम पुणे, हम लोग एक दिन के ट्रैक पे गए टू अंधरबन जंगल ट्रैक, विच इज़ वेरी फेमस हियर इन महाराष्ट्र. एंड पूरे रास्ते क्या व्यूज़ थे, ओ माई गॉड, इट वॉज जस्ट कुंडालिका वैली के व्यूज़ थे, वाटरफॉल्स थे, लाइक देयर वर हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स एंड जस्ट डेंस फॉरेस्ट. वो ट्रैक मेरे लिस्ट पे था बहुत टाइम से, एंड आई फाइनली टिक्ड इट ऑफ. आफ्टर दैट अगस्त में शायद मैं एक इवेंट पे गई थी, एंड इट वाज अ फुल ऑन सोशलाइजिंग काइंड ऑफ इवेंट फॉर मी, बिकॉज मैं किसी को भी नहीं जानती थी वहाँ पे. एंड आई डिसाइडेड, आई सेड टू माई सेल्फ दैट दविशा, यू हैव टू जस्ट गो एंड टॉक टू एवरीबडी इन द रूम. सो आई डिड दैट. आई मीन, आई टॉक टू एटलीस्ट 70% of the people in the room, and I was so proud of myself that day. I made so many new connects and contacts, and it was just very nice. I felt good that day, satisfied. Then सितंबर में हम लोग ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया टू इंदौर विथ माई पेरेंट्स. सो मी, माई सिस्टर एंड माई पेरेंट्स, वी ऑल वेंट टू इंदौर बिकॉज उन लोग को महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर के दर्शन करने थे, एंड वी थॉट कि हम लोग भी कर लेंगे और सराफा मार्केट में थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाएगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. बट इंदौर वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज. इट वॉज पोरिंग डाउन रेन व्हेन वी रीच देयर, सो सबका मूड खराब हो गया. बट देन हम लोग बारिश में भीगते भीगते थोड़ा बहुत घूमे, एंड लास्ट डे पे थैंकफुली बारिश बंद हुई. सो वी देन एट गुड फूड एट सराफा मार्केट, एंड इट वॉज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. इतना टेस्टी था उधर का खाना दैट आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक एंड do it all over again. So I'm definitely going back to Indore. Apart from that, हमारे वहाँ पे एक मिसहैप भी हो गया था, which I've spoken about on Instagram. बट ठीक है, शॉर्ट में बताऊँ तो टिकट्स कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ बारिश, एंड इट वॉज जस्ट टोटल मेस. इट वॉज केओटिक. सो हम लोग को अर्जेंसी में कुछ भी बुक करके कैसे भी जाना पड़ा, एंड फाइनली रीच टू मुंबई. सो थैंकफुल द डे वी रीच टू मुंबई सेफली. सो येस, दैट्स व्हाट हैपेंड. देन सितंबर के एंड में माई पेरेंट्स वर हियर, सो वी प्लान अ स्मॉल लिटिल गेट अवे अगेन टू अलीबाग. सो मेरे पेरेंट्स कभी फेरी में ऐसे सच बैठे नहीं थे, तो हम लोग ने एक फैमिली ट्रिप टाइप का प्लान कर लिया.
फेरी में उनको लेके गए अलीबाग तक, एंड वी ऑल हैड लंच ओवर देयर. वी हैड जस्ट क्वालिटी टाइम विथ all family members including my jiju, and it was such a nice day out. Everyone was just happy and chill and किसी को कोई टेंशन नहीं था, सब एकदम मस्त मज़े में थे. So yeah, it's a core memory I would say. And October was really packed with work because मेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं था. I planned so many videos for Instagram, for YouTube and so much more that I was completely occupied, of course along with office and everything. So it was very hectic, but I'm so grateful because I could create so many fun videos, different kind of videos. I did collab with other creators, and it was just a new experience overall, so I enjoyed that. उसके बाद नवंबर में एक नायका का इवेंट हुआ था, एंड आई गॉट इन्वाइटेड टू दैट. सो आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज नायका इज़ वन ऑफ द ड्रीम ब्रांड्स दैट एवरी क्रिएटर वांट्स टू वर्क विथ, at least everyone in the fashion and beauty industry, because it's the biggest of them all. And I got invited, so I felt really nice. It was Nykaa Land, and अच्छा था, it was fun. उसके जस्ट बाद वी वेंट होम फॉर दिवाली बिकॉज 12th की दिवाली थी आई थिंक, एंड हम लोग को घर पे सेलिब्रेट करना था. सो वी वेंट होम एंड वी स्पेंट लाइक एन एंटायर मंथ एट होम, विच वॉज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू बिकॉज घर पे एकदम चिल हो जाता है. I did not shoot anything while I was there, so that was a nice break that I needed, I think, because यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे ब्रेक नहीं मिलता because there's office, there's work, and वहाँ थी तो मैं एकदम holiday mode में चली गई. मैंने बोला it's okay, let's leave it for now. While I was there, we went to Kumbhalgarh Fort for one day. I have uploaded a vlog on that too, and it was a nice day. After that, me and my sister, we both went to Jaipur for 3 days, I think, and it was awesome. Jaipur is so beautiful. I did not know that, and we explored so many things in Jaipur and had the best time. So again, that's a good memory, and I'm so grateful that we could pull that trip off. And lastly, December में so Christmas week था and सबकी छुट्टी थी. So me and my cousins, so we were 9 to 10 people, and we all planned a small little getaway to Mahabaleshwar, Panchgani, Vasota, camping, all of that, and had so much fun over there because it was a long due trip because cousins का time कभी match नहीं होता. We had so much fun. We played games, we partied, we danced, and just had endless conversations, and I think that was something that we needed to kind of end this year. And I'm so grateful because cousins का time कभी match नहीं होता, but this time we made it happen, and I think सब लोग बहुत खुश थे. So yes, that's it for this year, and next year के लिए I do have some things in mind that I want to achieve. Resolutions पे उतना believe नहीं है, but there are some things that I really want to incorporate in my life, and let me just put it out there so that it's a promise from me to you that I'm going to stick to these things. So let's see. So firstly, I want to read more books because मेरा screen time इतना ज़्यादा हो जाता है with shooting and office and editing and all of that I want to reduce that and maybe incorporate reading every day. ये मैं हर साल बोलती हूँ but नहीं हो पाता है. So I'll try to stick to it. Then workout. इस साल मैंने कुछ workout नहीं किया honestly because I was very off with respect to my physical fitness, so I want to incorporate that at least half an hour ही सही, but I want to work out every day, 5 days a week, yeah. So that's something. Then I want to post more regularly on YouTube because I know 2023 में I was so off YouTube, but I genuinely enjoy talking to you guys. इसीलिए मुझे फिर से इसको consistent रखना है. I want to upload regular videos, so that's something that you can call me out for. And apart from that, I really want to at least hit this milestone of 100k subscribers and 100k followers this particular year on both platforms, YouTube and Instagram, because I've been creating content from last 4 years and I think now is the time that I get rewarded for that. इसके अलावा I think I want to prioritize my work, I want to socialize more, I want to get better with networking, I want to upskill myself with respect to content creation. I hope to leave my job very soon. Let's hope for that together because I would be able to create even more content if I have that bandwidth. I want to maybe go on more trips. I want to do one international trip at least this year. At least I want to try because मैं अब तक नहीं गई हूँ इंडिया के बाहर and it would be a big step for me if I do. So fingers crossed. I guess अभी के लिए इतना ही. I might add things as and when required, but I think we are good for now. And I'm so looking forward to the next year because बहुत सारी exciting चीज़ें हो सकती है. I just can't wait. It's exciting. I'm really pumped and
looking forward to it. I hope that you are also looking forward to the next year, because whatever that did not happen this year might happen next year. So hope is the only answer. And yeah, I really hope that you guys enjoyed watching this video. If you did, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, comment below, and let me know some of your memories from this year. I would love to read all your comments because I read each and every comment. And yeah, share this video. I'll see you in the next one next year. Bye bye.